So moved to Pakistan, young age of 15, and उसी वक्त तुम टेलीविजन में भी घुस गई. आई केम और मैंने हमने बड़ा धक्के खाए, स्ट्रगल किया. बहुत धक्के खाए. लाइक अम्मी की फैमिली लाइक कभी यहाँ से हमें घर से निकाला, लाइक एक होता है, वो एक होता है ना, 2 बेटियों के साथ आके इन बेटियों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बोझ है. और ज्यादातर अब्बू वेंट टू लंदन, तो नानी वाज लाइक यू नो माय फादर वाज थोड़ा रंगीन तबीयत. अम्मी वाज टोटली देसी. अम्मी हैड दैट थिंग कि बेटियां बड़ी हो गई है अब तो सीधे हो जाओ तो ये. एंड अब्बू हैड दैट थिंग बेटियां बड़ी हो गई है तो क्या हुआ. Yeah, age is just a number. Yeah. My father was like that. So Yeah. Ammi was Zameen Asman. That's how my mom and dad were. But he's still in love with her. You said he was 200% in love with her. He was, but वो एक होता है ना that like over time marriage. Yeah. Marriage or at the same time dad was very party. And Ammi was not at all. Yeah. My father had different ways. Did they separate at some point? Yes, they were separated. Isliye Abu went to London, and Ammi didn't like one thing that Abu really. My first betrayal that I got from a man was my father. He broke my heart because वो एक चीज़ होती है ना जब आपको एक ज़रूरत होती है और जो इंसान आपको प्रोटेक्ट कर सकता है वो इंसान आपको अबैंडन करके चला जाता है ना, तो वो एक बड़ी एक इट्स and you're young, वो बड़ा हैवी होता है. एंड आई वाज रियली क्लोज टू माय फादर. तो आई फेल्ट लाइक जो पहला बंदे ने मेरा दिल तोड़ा वो मेरा बाप था. And the first cut is always the deepest. Yes. And also from I think I completely understand that because I think my mother went through that. I think her father betrayed her at the age of 20 and she was very worried. But when my father took over, वो कहते हैं ना वो एक somebody goes and somebody else, but sometimes you also have to take over yourself. So मुझे लगता है कि you then took over. Did you take over? How did you survive then? Basically, I remember वहाँ एक अखबार आते थे, तो me and my sister we used to वो जो jobs का वो नहीं होता था, we used to like circle it off, and बड़े उसमें I met a lot of predators. Oh, of course. People did bad things to me. They really did bad things to me, and I don't like talking about that. Okay. But I survived. I survived. Yeah. You survived. I think that's the thing is that and also मैंने कहीं पढ़ा भी था. I think Mathira, I think when you come किसी और मुल्क से जब आप आते हो ना तो आपकी सोच एक अलग होती है, बहुत innocent होती है. I was reading about this blogger. She was in Pakistan recently and there was a guide. You know, she went all over Pakistan. She was promoting Pakistan. And that guide brought 2 friends one day to the hotel and raped her and everything. And that, you know, perception जो आपकी होती है कि आप you're innocent, you think everybody else is good, और आप किसी और मुल्क से आ रहे हो, उधर की सोच अलग है, यहाँ की सोच अलग है, तो उसमें आप थोड़े से गुम हो जाते हो. आपको बहुत तकलीफ भी होती है बिकॉज आप ये सोचते हो कि यार इनकी सोच कैसी है, हाउ कैन पीपल थिंक लाइक दिस, हाउ कैन पीपल डू थिंग्स लाइक दिस. बट इट्स दैट इट हैपन्स एंड इट्स वेरी वेरी पेनफुल एंड इट्स वेरी हर्टफुल and that's what I read कि you know whatever जो भी तुम करने जा रही होती थी तुम अपने सोच से और इनोसेंस से कर रही होती थी और लोगों की तुम्हें उस वक्त समझ आनी शुरू हुई कि यहाँ की सोच कितनी डिफरेंट है. आई थिंक दैट एक बात बताऊँ, मैंने अपना पावर तब पता चला मुझे जब आपसे सब कुछ छीन जाता है ना, when you have nothing and when you realize that अब क्या होगा अभी से बुरा, you know, in life में there's nothing else to lose, now what? And when you come into that now what phase, now you end up being cold, you end up hating men, you end up not trusting them because वो एक लगातार you just see one person doing, you know, एक miscommitment से miscommitment and you know there's no honesty नाम की कोई चीज़ होती नहीं है. and ज़्यादातर लोगों ने, मैंने ये realize करा in पाकिस्तान वो एक चीज़ ये होती है that अगर किसी ने छोटे कपड़े पहने so she is like you know open to sex. Yes. You know that is not it. That is not it.